हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं पैशन प्रो की छाइस को वेल्ड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Welcome to Dynamic Custom and Restore. Subscribe to our channel and press the bell icon to get latest video notification. जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां शॉक अब्जॉर्बर को माउंट करते हैं वो जंग के कारण पूरा हिस्सा टूट चुका है। अब इस पार्ट को कट करके नए पार्ट से रिप्लेस करेंगे। पीछे भी आप देख सकते हो पूरे तरीके से गल चुका है। कट करने से पहले होल्स के निशान को मार्क लगा देंगे, जो आगे जाकर यूज होगा। अब हम एंगल ग्राइंडर की मदद से वेल्डिंग के बीचों बीच कट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों साइड कट कर लिया है। चीजिल और हैमर से कट किया हुआ पार्ट को अलग कर देंगे। नया पार्ट बनाने के लिए कट किया हुआ पार्ट के मेजरमेंट से निशान लगाकर होल्स ड्रिल करेंगे। इस शॉक अब्जॉर्बर माउंट को लेथ मशीन में फिट करेंगे और रिंग की मदद से नट को लूज करके शॉक अब्जॉर्बर को अलग कर लेंगे। ड्रिल के मेजरमेंट से माउंट के डायमीटर को घटाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो माउंट परफेक्टली फिट हो रहा है। अब हम एंगल ग्राइंडर से निशान पर कट करेंगे।
हमारा नया पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इस पे वेल्डिंग करना बाकी है। अब इस पार्ट को जो हमने पहले निशान लगाया था उसके हिसाब से रखकर वेल्डिंग करेंगे। तो ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करिए।
Thanks for watching. For more updates, subscribe to our channel.